Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Societies, AYUSH Samriddhi International Conference Series at milestone of 2096. Thank you. Thank you very much for joining us. We are really grateful to you all, especially Professor Kamini Dhimanji, for inspiring us to conduct these two webinar series, Infertility series and today Women Wellness series. In Women Wellness series, today's most vulnerable topic is cervical pre-malignancy, an Ayurvedic approach. In this, along with Kamini ji, sorry, Dr. Prajita PK from Kannur will guide us on the topic. So without wasting much time, I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his blessings. Then we can start the webinar after Kamini. Thank you, Professor Panshamanji. I welcome all the guest speakers and the distinguished authorities present over the platform. So we are proceeding with a new month, February, on our 2096 webinar on the topic cervical pre-malignancy Ayurvedic approach under the direction and guidance of Professor Kamini Devan ma'am from All Institute of Ayurveda, Setabiyar, New Delhi. The selection of topic, the selection of guest speakers are all bestowed upon her. So with her great presence and moderation and cooperation, coordination, we are here to conduct the females well-being series under her guidance. So I welcome Professor Kamini Dhimanji, along with today's guest speaker, Dr. Prajita PK from Kannur, and all the guests, our dignitaries, including Professor Pawan Sharma, Professor Chan Shoklaji, Dr. Vandana Pathakji, Dr. Veena Rosevi, and all the guest speakers who have just ornamented our platform, for total in 17 in number. So I welcome all these our fellow. At the same time, all the guests, all the persons, those who are being through our YouTube presentation. So with all this presentation and talking over the cervical pre-malignancy, I do hope that Professor Kamini Dhimanji will highlight the topic and its modalities along with the direction to the guest speaker. So over to Professor Pawan Sharma for further proceedings. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Professor Kamini Dhimanji. Welcome. Welcome, madam. Now stage is yours. जी नमस्कार पवन सर, अग्निहोत्री जी, Nishant ji, Beena madam, Anjana madam, all the dignitaries present over this platform, and all the participants who are eager to listen to this topic. And I can say that she is my scholar, but she is working in Kerala as assistant professor, Dr. Prajita. Today we have selected the topic pre-malignancy. Nowadays, cervical cancer is very much common in females. So earliest identification of the condition is very much important, and how we can approach and how we can give the answer to our patients. Patients are coming to us, although we are doing investigations and checkup of the females, pap smear we are doing, colposcopy we do, but we have to give the Ayurvedic management to those patients. And after identification, we can guide them and we can advise them. So today we will have very good understanding, or we can say very good approach of this topic. We will listen to Dr. Prajita, and then we will take up the questions of our participants or in view of our dignitaries who are present over here. If anyone want to add upon the topic, so Dr. Prajita, over to you. You can share your screen and you can start your presentation. Dr. Prajita. Thank you, madam. Namaste, ma'am. Namaste, all the dignitaries. Let me share my presentation first of all.
Hope I am audible. Hope my slide is visible. Yes, yes, slides are visible and very nicely audible too. Okay, ma'am. Thank you. Today's topic is cervical premalignancy, an Ayurvedic approach. Myself, Dr. Prajita. Actually, I am a PhD scholar in All India Institute of Ayurveda under ma'am's guidance. And currently, in between, I have been posted as assistant professor in Government Ayurveda College, Kannur, Kerala, in Prasuti Tantra Sriroga Department. Excuse me. I think the slide is not moving. 1 second. Stop share, then again share. It will be moving. Okay, sir. 1 second. I'll check it. I think it got hang. Don't worry. Don't worry. Okay. Let me start the presentation with humble blessings from my gurus. Pade padarte gadanigrahe cha yemam vininyur guru karanika tesham gurunam padapadma redum kridartadaya shirasavahami. I'm very much privileged to give this presentation on particularly in this month because Feb 4th is World Cancer Day and January was the Cervical Cancer Awareness Month. So let's start the presentation. Let me give a brief introduction. As you are all are aware, cervical cancer is the fourth most common cancer among women globally, with an estimated about 6 lakh new cases and 3 lakh deaths in latest reports of 2020. About 90% of new cases and deaths worldwide occurred in low and middle income countries, particularly in India. In India, it's the second most commonest disease, cancer, particularly in females. It is alarming to say that one woman dies of cervical cancer every 8 minutes. And what can we do for that? WHO has already established a comprehensive cervical cancer control, which includes primary prevention, that is actually the vaccination strategy, secondary prevention, which is screening and treatment of precancerous lesion, and tertiary prevention is the diagnosis and treatment of invasive cervical cancer. What is actually cervical intraepithelial neoplasia? Because I am dealing not with cervical cancer as such, and I am dealing with cervical premalignancy. So let's first understand what is premalignancy. The most important thing we have to notice is that many of the cancers doesn't have a premalignant stage, but in females, cervical cancer, which is the second most verifying cancer in females, is having a premalignant state, and that emphasizes its prognostic significance. When we correct it in the premalignant stage itself, the ladies or the females don't progress to cancer as such. What is CIN? It is actually a histopathologic condition where a part or whole thickness of the cervical squamous epithelium, जैसे हम सबको पता है cervix में cervical squamous epithelium होते हैं, in that area is getting affected as a part or as a whole, and it is further replaced by cells which is having some sort of atypia or different growth. Mainly, we know human papilloma virus is the most important cause. Approximately 99% cause of all the cervical cancer is human papilloma virus. And among that, there are many low-grade strands and high-grade strands. But the strand 16 and 18 are responsible for nearly 50% of all the cervical precancers. And in our clinic, we often undergo routine screening in these females. Let me say to you that all those females who are having abnormal pap smear is 35%. Those who gets diagnosed with CIN, which is premalignancy, is 20%, and invasive cervical cancer is 1%. These are all basics about the anatomy and physiology. Even then, I'll have to mention a little bit because then only we can understand the pathology. Based upon how much layer is affected in the cervix, we grade CIN as CIN1, 2, and 3. In CIN1, the cellular differentiation or the atypia is seen in the lower one-third and normal cell in the upper two-thirds. In CIN2, again, the lower two-third is affected. CIN3, the differentiation stratification may be totally absent or present only in superficial quarter of epithelium. These are the picture of CIN which we usually see under the microscope. This is what the first image is what we see in the normal cervical epithelium. When it comes to CIN1, we can see a portion is getting affected. CIN2, major portion is affected, and CIN3,
The cells, the pattern of the nucleus can be very much verified. The pictures which are given in the bottom portion is also representing the same thing. Now, how a female is getting more prone to CA cervix? As Madam has already told, CA cervix is very common in our community, in our country these days. Even though there are a lot of screening procedures, the number of cases is not getting reduced. So, what is the actual risk factor? There are certain gynecological factors, that is, early age of first sexual exposure and conception. In our country, the marital age of females are very low. In these days, it has increased further, but even then, the girls who are getting exposed to sexual contact in a very early age is much common in these days. So those who ever are having the early first sexual exposure as well as conception are prone for CIN. Multiparity, the number of delivery which happens frequently without a very little gap in these females are also making them more prone to CIN, because there is frequent small lacerations or cut marks which happens in the cervix, which makes it more prone to oncogenes and further to cancer. Multisexual partners, of course, we know there are many group of STDs, and human papillomavirus is an STD. And when if the male spouse is having any sort of HPV infection, the female is also having prone to get HPV, because that is a virus. All sorts of STDs, OCPs, oral contraceptive pills also to an extent increases the chance of CIN. Other factors. These are certain factors which we have to notice much in the females who come to our clinic, because in India, the socioeconomic status is comparatively poor to other developed countries. Those poor socioeconomic status females with highly immunodeficiency, who are prone to smoking, not only active but passive smoking also, who are nutrient deprived, all these are much prone to CIN and further to CA cervix. Let's have a glance on the pathogenesis of CIN. Here we can see the squamocolumnar junction. Actually, every females have a squamous epithelium and a columnar epithelium in the cervix. The squamous epithelium is seen in the ectocervix and the columnar epithelium is seen in the endocervix. Even though the columnar epithelium is present in the endocervix, sometimes it peeps out towards the ectocervix. Columnar epithelium is a much fragile epithelium, and what happens is whenever it gets exposed to the vaginal pH, actually to the ectocervical pH, which is more of acidic, it gets damaged in certain amount. And these columnar epithelium has the basement layer of this epithelium have immature columnar epithelium. These are called as reserve cells. These are the cells which further developed into squamous epithelium or columnar epithelium. So whenever this epithelium comes outwards and it gets more exposed to the acidic pH and other changes as not in the columnar side, it results in its replacement, and the cells tries to get converted into squamous epithelium. And this is what we call as metaplasia. Metaplasia is actually a normal physiology which happens in every females. So this is the squamocolumnar junction. The squamocolumnar junction, there is a columnar epithelium. It gets exposed outside, so that gets converted into metaplastic squamous cells. So initially it was columnar, it slowly gets converted to squamous epithelium. But these are actually immature, unstable cells, because it's not totally converted into squamous cells. Previously it was columnar. So what happens? These cells, whenever they are prone, the female gets become more prone to any sort of oncogenes, any sort of carcinogens like HPV, results in certain changes to these cells. If there is no HPV or no infection or no other oncogenes present, it normally converts. It will be physiological metaplasia and it get differentiated to normal squamous epithelium. But on the other side, if it is getting exposed to carcinogen, not only a single time, different episodes of infection like HPV gets persisted there every time, then the cells shows certain type of mutation and it turns to atypical metaplasia. And atypia means different or undifferentiated different sort of cells, and that is actually the root cause of where cancerous growth starts in the body of the female, and that results in CIN. The duration and disease progression, this is another important thing which we have to think about, because any females
who have gotten HPV infection. As we all are familiar, HPV is such a common virus. It can be seen in all the warts which is present in our body, small moles present in our body. It's very common virus. And we can say all the females are at least once or twice exposed to HPV, all those who are sexually active. So there is HPV infection. And if the female's a normal immunity is good, it gets cleared off by its own. But sometimes what happens is the patient is immunocompromised, or he's just not um, following good hygiene. In such patients, what happens is the infection persists. So initially, when she was 25 or 30 years, she might have developed a CIN1 or HPV lesion. What happens is the infection persists. Within about 5 years, 1 to 5 years later, it develops to CIN1 and further to CIN2 or 3 and later to cervical cancer. But in every stage, in CIN1 or CIN2 and 3, it can easily get cleared and the HPV infection may clear and the female may get okay. So remember, if a patient comes to us in 25 or 30 years complaining of white discharge and all those different difficulties, we go for a pap smear or a colposcopy or any test, screening test, and we find her suspected. She must be kept for regular follow-up screening, and also she must be treated in that age itself. Then she may not progress to see a cervix in her 45 or 50 years, which is 10 to 20 years later. So there is ample time for each practitioner to treat such cases. Only thing is we have to find out the case, advise the patient for regular follow-up, give the medicines along with regular checkups. Then we can prevent many number of cervical cancers. What are actually the screening of cervical premalignancy? Most of you may be familiar with these tests. Even then, I'm just giving a glance about that. The screening techniques for cervical cancer includes pap smear, which is a very common test and a cheap test which we can employ in OPD. Also, there is liquid-based cytology (LBC), in which there is a brush along with a small liquid-based cytology box. Another inspection is visual inspection test with leukocidin and acetic acid. These are actually OPD level procedures where we can paint the cervix of the patient after exposing it with cuscus speculum, either with 3 to 5% acetic acid or 5% Lugol's iodine. After painting that, we'll see what changes happens, what different patterns happen in the cervix, and then we can identify if she is prone for CIN or CA cervix. Then we have colposcopy, which is a more advanced test, which we doesn't perform in all patients. But if they come prone with pap smear or visual inspection test or HPV detected, then we go for a colposcopy. Then there is HPV DNA testing, which gives us which strand of HPV has affected. Most of the CIN1 as well as warts, moles, etc. is affected by low risk HPV and which are very rarely causing cancer in later period. But if that is also persisting for 10 to 20 years, it may lead to CS cervix. But there are certain high risk HPVs also, mainly 16, 18 are the commonest type of HPV, which are high risk and which are also included in the vaccination strategy so that we can detect. Also, there are certain digital cervical screening tests similar to colposcopy, which we can employ in OPD. This is a bit elaborate slide. Even then, I'll just mention certain things about it because we must be aware when these females must be screened. Sometimes what happens is females in our OPD comes and tells us because people are more aware than we practitioners these days. They do all the Google search, all the YouTube search, and they come to us and tell, should I go and get done my HPV testing? Usually these young females who have already had some sexual intercourse, should I get HPV vaccinated? So just for that understanding, I've kept this slide. How frequently we must do the screening. Initial screening must be always 3 years after initiation of sexual intercourse, not later than 21 years of age, at least 30 years of age in our Indian community. Coming to the frequency, if she's a low risk woman, how can we say she's low risk? She doesn't have any particular symptoms. She doesn't have any history of multiple sexual partners or early marriage, etc. She's a low risk patient. Even then, if she is less than 30 years, we can do a pap smear test annually. If she is greater than 30 years, we have to do the annual test. And if 3 consecutive annual smears are negative, then we can do the test only after 2 to 3 years. Cytology with HPV screening is appropriate for women greater than 30 years. If she is greater than 30, go for a pap smear and HPV screening also.
If she's high risk, how is she a high risk? If she has some immunocompromised disease such as HIV infection, or she has previous history of CIN2, 3, etc. In such patients, the screening must be more frequently. In HIV, whoever is diagnosed, that is actually a protocol. Whoever is diagnosed with AIDS, she is being screened for CIN twice and then annually. And those who have already treated for CIN 2, 3, there also we have to repeat these smears annually until 3 consecutive negative smears. And if she had been undergone any hysterectomy, why we are thinking about a person for screening even after hysterectomy? In some cases, cervix will be not removed in hysterectomy. In some, even though the cervix is removed because of any CIN lesion, the vulva is also prone for VIN lesion. It is actually vulval intraepithelial neoplasia. That can also happen. Vaginal intraepithelial neoplasia can also happen. Wherever there is squamous epithelium, these are prone. So we have to follow up those females further also. Actually, discontinuation, there is no any particular discontinuation age, but if at least many reports have been like negative, then we can allow them for discontinuation of the smear. This is actually an HPV triage and test of cure protocol. It's mentioned by NHS. It's not that important even then. If a patient comes to us with HPV negative and HPV positive, what are our strategy? If she's HPV negative, chalo koi baat nahi, you can do further screening if necessary. If she's HPV positive, we have to go for the colposcopy. That is important. We have done the colposcopy and it shows like a more borderline mild or negative colposcopy. We have done no biopsy or we have done a biopsy and there is no CIN, then we can allow them for a routine scanning after 3 to 5 years. In our community, better 1 to 2 years. If she is diagnosed with CIN, what should we do? We can go for a treatment or no treatment, because some patients doesn't prefer for treatment. Some allopathic doctors also say CIN need not be treated. CIN1 particularly, we can just do the follow-up and go. And when she is developing symptoms or it is increasing, we'll go and attack it then. That's not a right method actually. Anyway, if she's not preferring any treatment, then we have to go and do her pap smear or colposcopy later on after 12 months. If she is diagnosed with CIN2 or 3, the condition is different because it's a bit high grade lesion, then we have to for sure do the treatment. Even after treatment, the screening continues. And further, if the HPV is negative or HPV positive, the further reports must be done accordingly. So colposcopy is actually the viewing of the colpos. It includes the vulva, vagina, and the cervix. So I'm not elaborating the details about colposcopy because most of you will be familiar with this. I'll just show certain images of colposcopy. How will it will appear? What to expect during a colposcopy? As you all know, simply a slide to just demonstrate that. First of all, we put the speculum after separating the vagina wall. The cervix is clean, and the doctor sees with a binocular apparatus, which is called as colposcope, to see the vagina, vulva, and cervix. And the doctor looks for any cell changes, growth or inflammation, and whichever is doubtful, we immediately pick and take a biopsy from the section and then go for the histopathology report and then decide for the treatment. Coming to the colposcopic images, these are certain images which we often see. Sometimes the patient will bring with us a printed report, and sometimes we may be performing the colposcopy. So I've already told squamous metaplasia is a normal condition. We doesn't want to worry about that. And Nabothian cyst also, it's a common thing. So these are the pictures which appear in the colposcopic image. Most often, when we see the picture, we'll get confused. There is some sort of aceto-white changes in the first picture, and there is Lugol non-uptake areas in this second picture. But these are totally normal because that is squamous metaplasia. The squamous and new cells, which are normal cells. And the lower picture, we can see advancing tongue. There is a tongue-like pattern seen in the colposcopic images. This tongue-like pattern is typically, we can say it is squamous metaplasia and it is normal, nothing to be worried. It seems like it's a dangerous cervix, but it's a normal cervix. Many of the females will be having inflammation like trichomonial infection or many other infections. In such cases, when we do a colposcopy, when we put the iodine test or the acetic acid test, we'll get similar images. This pattern is not a leopard skin pattern, and this is normal. Normal means it's just having inflammation, it's not cancerous. There comes low-grade squamous intraepithelial lesion. I think the picture is visible. In the 12 o'clock position, we always mention colposcopic images in clock position. The 12 o'clock, we can see a whitey patch area, which is the aceto-white patch in the acetic acid test, which we can do with our naked eyes itself.
these are colposcopic images. With normal naked eyes also we can see this. In Lugol's also we can see that pattern. These are dangerous. Actually, less dangerous, but they are dangerous. Low-grade lesions. These are high-grade lesion. You can see how thick the acetovite is. It appears like we can see the timer also there. Usually after doing the colposcopy, we put the timer on. In timer, we can see 132. Like after 1 minute 32 second also the acetovite is still persisting. That means that much cellular atypia is present. That much cells are producing proteins, atypical proteins, and that are getting stained by the acetic acid. So this is the Lugol's picture. Again, this is the same. Upper lip there is a high grade lesion and lower lip there is a low grade lesion. And this is the picture of an invasive cervical cancer. There will be peeling, there will be spotting, everything. Okay, those were all about the pathology and the modern portions. Now let's see how we can approach it Ayurvedically. Coming to any disease in Ayurveda, we don't have an equal to correlation with any modern disease, and we neither want that approach because we are treating the patient with the patient's condition, the dosha, and the sambrapti of the vyadhi. And for that, we have to always go upon the nidana of the patient, then to the sambrapti, and then finally the chikitsa. So, like every disease, let's have a small glance upon how the dosha hetu, vyadhi hetu, and ubaya hetu can be explained in this disease. Dosha hetu, like we know, all the yoni rogas, all the female disease, the root cause is in vada itself. Here also, vada is a predominant cause. Actually, not vada, the disrupted vada is actually the root cause of any disease in yoni roga also. Here, it is more of a tridosha koba roga. And the tridosha koba nidana, which has been mentioned by Acharya, many of these are coming in many of the yoni rogas. Similarly, here also, we have to consider the Vishamashana, Viruddhashana, the Prasava Vaishamya, Mityopachara, and Dushtanna of these females. These are all very, very common in most of the females, be it an educated class, be it a higher socioeconomic status, be it a lower socioeconomic status, whatever it be, females are very much prone to all these things, also Vegadharana. So Prasava Vaishamya, we can specifically think about that if she's a multiparas lady. In our country, again, now also we have grand multipara, 4, 5, 6. Many females are delivering frequently. That too, they don't have a gap in between the pregnancy. These are all, Acharya have mentioned, these are all as nidana of these yoni rogas or tridosha vyadis in that era. So even now we can take all these things in our treatment also. Okay. Coming to yoni roga specifically, we can't equate it with any particular yoni roga. Yes, of course, this disease is commonly associated with pelvic inflammatory disease because most of the females are affected with pelvic inflammatory disease, or to so some extent we can say paripluta. Paripluta vyadhi is a very common vyadhi. Paitigi is a very common vyadhi. These are all the presentations will be different sorts of discharge, pain, systemic illness, jwara, dyspareunia, and all those features. We have many females with these changes. If she's having infection, pelvic inflammatory disease, initially it will be acute, then it will turn to chronic. Later on, she'll present like it is always present there. It becomes that chronic. In such females, she's also immunocompromised. Maybe she's from a low profile, a low hygienic status. In such females, these changes also may occur along with this. So we can't equate this vyadhi with any type of yoni roga alone, but many of the yoni roga nidana can be considered in this vyadhi also. Mityachara, Acharya Chakrapani has very well said, Mityachara, Ahara, Vihara idi. So we have Ahara, which I've already told, Tushta Bhojana, Vatapitta, Vardaga Ahara, Guru, Ushna, Abhishyandi, like Dadi, Katuamla Lavana Rasa, Matsya, to an extent. These are all like Pitta, Vata Pitta Vardaga, to an extent, Kaba Vardaga. We can see all the Tridosha Nidana here also. So Ahara is playing a very important role in the Nidana of this Vyadhi. Vihara again, all female gynecological disease, Vegadharana, of course. Shoga, Chinta, Divaswapnas are all very common these days. Vrishamaituna, again, we can think about it in much serious matter. Acharya Sushruta has specifically mentioned when there is excessive coitus in Bala, that's specific Bala age, we can consider in a CIN also those females who have sexual exposure in a very lesser age, less than 18 years, specifically if we say,
to my interest also, I've noticed many females whoever were actually I am doing PhD in the same subject. Those females who are the case in my PhD study also, many females I could notice that their marriage age was very young, like 16 years, 17 years. She have delivered two kids in by 18 years. So that's very common. I don't say that it's not common in older age ladies. There also it's common. But this is a thing which we must think about. Adaksha Purushotpanna, Sapatni, which Acharya Sharngatara has very well mentioned about these as a Nidana of Yoni Roga. Adaksha Purushotpanna, unhygienic male partner, male spouse. That's an important factor. Sapatni. Sapatni in that days, we were not sure what it was, but we can consider it to be a extramarital relation or relation with other females who have the same disease. Now coming to Vyadhi Hedu, here the Vyadhi Hedu has a specific fact, and that is actually the Agantuja cause or the Krimi. Krimi, Acharya has mentioned about Krimi in many contexts. I have mentioned about Aupasargika Vyadhi in many contexts. So they're all we can consider some sort of extrinsic factor, Agantu Vikara, Agantu cause, which causes the disease. And here we can consider it to be HPV. Samprahara. Samprahara is actually is mentioned to be a cause of this. We can consider some sort of epithelial lacerations which happens in the cervix because of frequent childbirth. We know whenever we observe a patient after delivery, we can see her cervix is like very much torn up. It takes so much time to get healed and corrected. Even after 2 or 3 delivery, like 4 or 5 years after, also when we see her, we can see the laceration or the how much hypertrophied or cervicitis, etc., is seen in such ladies. So it doesn't heal so fast. So such epithelial lacerations may be a cause. Gatra samsparshat, as we have already told now, Upasargika Vyadhi. Ubhay Hedu, actually, all these things happen in most of the females. But even then, in some, why does it persist? It may be persisting because of her poor Vyadikshamatva. Vyadikshamatva, all those females whose bala is very good, they we are also familiar when there is an allergic condition, or like when the cold season comes up in Delhi, some sort of people, some group of people are not affected, but majority of the people are getting affected by the cold. They're getting allergic symptoms, all those things. That is because of their poor bala or poor vyadikshamatva. So that is a root cause in many of the disease, and here also it is important because this disease is caused by a virus. What is HPV? It was just a glance. We can think about HPV from our older context. We can consider it as an Agandur Krimi, can consider it as a Janapadodvamsa Vikara, or because of Adharma actually, because it is very prone these days, very common. In Yoni Roga context also we can think about it. Granthi, Arbuda, Yoni, Vrana, etc. also we have to consider. Avasirgaga Vyadhi again. Let's have a glance upon the Samprapti. This disease can be considered having its root origin from as both from the Abhyantara Roga Marga as well as Bahya Roga Marga. Coming to Abhyantara Roga Marga, as most of the diseases, the Mityahara results in Agni Mandya and Samarasa formation, because these days we know most of the people who come to our OPD are having Agni Mandya and Samarasa, the rasa which is produced from the actual nutrients which is available in the body. It's not at all in the pure form. It is always in the Sama Avastha. There is a result of the Dhatu Pushti will be happening, but it will be an improper Dhatu Pushti. The rasa won't be reaching Rakta in proper manner. Further, all the Mamsa, Medas, etc., not in the improper manner. Along with that, there is contribution of Kobak, Shuddha, Shoga, Srama, etc. Because we know most of the people are stressed these days. We are all stressed in one or the other way. That all these things contributes to the Ojakshaya. We know Ojas is actually the essence. It is the final essence of all the Dhatu Pushti. And that is getting hampered. And she is having Ojakshaya in some manner, which results in the reduced Vyadikshamatva and Balakshaya in that female. So she is in such a scenario. Along with that, the Bahya Roga Marga, which we have already mentioned, because of the Mityachara, there is affliction of HPV. Even if there is no Mityachara also, HPV happens in all the females because it's a sexually transmitted virus. Initially, there is Vadakoba, which later results into Pitta Kaba Prakoba. Because of the Ashrayashri Bhava, the Rasa Rakta Mamsa Dushti happens. And the site of the Strota Vaikunya being cervix, there results some sort of Shobha or Brana Shobha at the cervix. This Shobha of the Avastha of the cervix or CIN is actually the Purva Rupa Avastha. It is not the Rupa Avastha even. Further on, if we ignore it in that stage, it results in Granthi,
further to Arbudavastha, which is actually the CA cervix. And see, it is the Bedavastha of the Kshatriya Kala. It was initially Pura Rupa Avastha where we could have treated it well. We have ignored it. We have not screened the patient. Even if screened, they have told just go for a follow-up, no need of treatment. Later on, after 10 or 15 years, the patient will come back with the Arbudavastha or the Bedavastha where we find it very much difficult to get treated. So this is what we have to think about the Samprapti Vikatana during the Chikitsa. Now, what is the approach of Chikitsa? Chikitsa must aim at how the patient comes to us. That is the first and important thing. First of all, how to prevent the occurrence. There are many females who doesn't even know about the disease. If she's not getting screened, if she's not coming to the gynec OPD actually, if she's going to some other OPD complaining, we have not at all observed her, or we have not seen her cervix, we doesn't know about this disease at all because the condition progresses later and forms CA cervix. So in such a patient who comes to us, how to prevent the occurrence, how to prevent the progression. She has been diagnosed. Now we must not allow her to progress. Now, how to prevent the recurrence? Further, how can we prevent the recurrence? So how to prevent the occurrence? Simply the occurrence by Sadvrita itself, by improving the Vyadikshamata. These two factors are very important. And to Sadvrita, we have to educate the ladies. We have to educate the girls these days. Be it vaccination or whatever strategy it is, we can't totally be against vaccination because it's like Ayurveda community is against vaccination. We can't say like that, but we have to check about it. Even the modern community is not sure how the vaccination is going to make a dramatic change. So whatever strategy we follow, the Sadvrita is very much important. We have to advise and educate the females. Vyadikshamatva. We have to take all measures to improve the Vyadikshamatva or improve the ojas. Now, how to prevent the progression? We have diagnosed, go for the intervention. Early intervention at Purva Rupavastha. She is showing a pap smear report with low-grade squamous intraepithelial lesion, colposcopy with CIN lesion, or at least nothing, there is at least inflammation. Don't leave her as such. Treat her. Tell her to do follow-up. Then we can treat it in the Purva Rupavastha itself. How to prevent the recurrence? Now, the female has been treated and every condition is okay now. Now, we have to prevent its recurrence because this is a condition which can again appear if her Vyadikshamatva is down or immunity is down and persistent infection is present, it can again recur. So avoid Prajnaparada, avoid all this Mithyachara. Manovegadharana is essential and Vyadikshamatva must be maintained. So how can we plan the treatment? As most of the diseases here also, we need the Shamana Shodhana Aushadha, particularly the Shodhana, Panchakarma Chikitsa and the Sthanika Chikitsa is much important in this case. Shastra Kshara Karma, because we have already told it's a disease with both the Roga Marga involved. It's a Kritra Sadhya Vyadhi actually. Kritra Sadhya means we have to opt for Shastra Kshara Karma or Pradisarana. In Kshara, we can use the Pradisaraniya Kshara, which is actually having a site-specific action. Then finally, end up the treatment necessarily with Vranahara Ojo Vardaka Aushadha. We have done the Shastra Kshara Karma. Now the Vrana must be given Ropana, Shodhana Ropana to promote the healing and also improve her Vyadikshamatva, which arrests the progression. Shodhana, these are some of the medicines which we usually prefer for such conditions. We can add many others also. All of you may give more contribution in this area. These are just some of my experiences. For Snehapana, we can think about Gugla Tiktaka Grita, Mahatiktaka or Tiktaka Grita. Tiktagana is more promising in such diseases. Abhyanga and Sweta is given with moreover with Pinda Daila. We can choose other Dailas also. Virechana is very much important with Avipatti or Trivirkleha preferably. Eranda is not a better choice in such conditions. More of Kapapitta Shamana is good. Now, Shamana, if we are choosing, the rasa which we choose is usually Tikta Kashaya Rasa Pradhana. The Kashaya which usually we give is Guglu Tiktakam, Mahatiktaka, Guduchadi Kashaya, Padolamuladi Kashaya are all options. Churna we can give Gugulu Panchabala Churna, Avipatti Churna, Gutika like Tripala Gugulu, Chandraprabhavati, etc. Sthanika Chikitsa is of utmost importance. The Ekadasha Vranashopa Chikitsa can be considered here also. Paitiga Yoniroga Chikitsa can be considered. Shastra Ksharagni Chikitsa also. For Kshalana, we can use Tripala Koshaya, Nalpamradi, or we call it as Panchavalkala in the northern parts of a country. In Kerala, we usually call it as Nalpamradi. There is a slight difference. Negrodhadigana, Aragvadadi Kashaya, etc. can be used for Kshalana. Pichu is very much important. We can give a Pichu with Mahatiktaka Grida, Jatyadi Grida, Nalpamradi Taila, etc.
Yoni Purana with Mahatikta Grida is very much promising. Sharagarma, for Kshara, we can use Tankanakshara, Tutta, or Rasaga. These are all being studied in many research studies, many PG studies, and was found effective. These are all very easy modalities also, Sharakarma, and that prevents recurrence also. And finally, always end the treatment with Rasayana and Ojavardhana. What we often do is we end the treatment with like they have have been showing some discharge or whatever disease, they've been showing some discharge and infective features. We give all the medicine, and if all the symptoms subside, we tell them no need to come. But end of the treatment, better end of the treatment with some sort of Rasayana or Ojavardhaka Dravya, because that improves her bala. She's already Kshabida with all the Aushada, the all the procedures, etc. Even after doing the Panchakarma, she's tired of all those things. So we have to improve her ojas and give Rasayana to her. Some of the Rasayana which we can choose here, Trifla Guglu itself is a Rasayana Gutika. Madhusnahi and Kadali Madhusnahi Rasayana are very promising in these areas. Rasagandhi Medugu is a southern medicine, is a Siddha medicine actually. That is also very much promising. But both these medicines, we have to see the Patya, all the Pitta Vardaka Patya. So we totally avoided, because even a little bit change in the Patya. I had a patient who consumed fish even after taking this, and she had developed many Paitiga symptoms like blisters and all those things. So he was much cautious while giving this medicine. Indugandha Grida is a very good medicine, or Indugandha syrup also is available these days. It's a very good immunomodulator drug, which is mentioned in Purana Jwara. Some details about the Patya and Apatya. We are all familiar. Patya, I have just mentioned the Yoni Roga Patya itself. Arishta Asava, which Arishta we can prefer? Abhyarishta, Punarnavasava, etc. is very good choice. Rasona to Udridam Rasam. Rasona Rasam is actually a good Rasayana. But remember, if she is suffering from that much Pitta, Paitiga symptoms, avoid Lashuna. Kshira, Yavana, Patya, Makshika, etc. are all good. Coming to apatya, gramya anupapishita aharas are better to be avoided in such conditions. Shushka shagam, tilanam. Tilam is good, but tilanam is a bit pitta and vidahi. So, but avoid that. Pishtana also. Dadi, Vallura, particularly the dadi is very much sore, avoid it. Maduram dadi is better, more preferable. Vallura is actually dried meat. That is more of common in South India. And sometimes also when we get processed food, there also we can consider the similar dosha koba as in Vallura. Guru Vidahi, Samashana Ahara, Divaswapna, Maithuna. Maithuna, we can't say that it's an apatya as a whole. Patient won't agree with us. So in such cases, always tell them to use condom. I've seen many patients doesn't even know why people use condom. When we are advising them to use such barrier measures, the patient tell मुझे बच्चा नहीं करना है वैसे नहीं है, तो मैं बोलती हूँ उनसे कि उसके लिए नहीं है, आपका इन्फेक्शन आपस में आ जाता है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्डम यूज करते हैं, तो देन ओनली दे कम टू नो दैट इट मे प्रिवेंट पीआईडी आल्सो. So we must advise the patient specifically to use such barrier measures. So that's all mainly. Let me give a small glance of some of the case reports which we have seen in All India Institute of Ayurveda. This was a patient. She had actually her complaints were of dysmenorrhea, and mainly she had low backache. I still remember when we asked a second time if she had discharge, then only she told discharge. She mainly had actually she was diagnosed with adenomyosis also. So she had dysmenorrhea, low backache, and all those things. When we checked her cervix, actually, she had already inserted a Merina in situ. It was present there because she had heavy bleeding in previous cycles, and they have advised Merina. And we found her cervix to be suspicious after the visual inspection test. And then we took her and did her colposcopic test. And the score came to be 7 out of 10. The scoring is actually, I have not elaborated all those things because those will become, the session will be like, it will make the session more delayed. So I didn't tell about the score. Even then, sweet score is a score which we use in colposcopy. See, sweet scoring, if it is like 0 to 4, it is a low grade lesion. Greater than 4, it becomes a high grade lesion. So in this female, the sweet score came to be 7 out of 10, and it was like very horrifying. Her biopsy was done, but the biopsy report, we expected a CI in 2 or 3, but the report came to be CI in 1. It was a smile dysplasia in 2 areas. So this patient was got treated, and later on her report came to be 0 out of 10. That was like it was a remarkable case.
The patient was also very happy. She's still under follow-up. The report came to be 0 out of 10. Another case was like this patient was a survivor of CA breast. She had CA breast and she already got treated for that, surgically removed, chemo, radiation, everything has been done. In CA breast patients, CA cervix, CA ovary screening, etc., has been run in routine. So this female already had, she was like, her marriage was in a very young age, like 14 or 15. She had 3 children also. So she also underwent the screening, cervical cancer screening. And there, on colposcopy, the score came to be 3 by 10. It was not an alarming score, it was 3 by 10. But even then, because it is greater than 0, biopsy was done on her and the report came to be again CIN1. It was mild dysplasia. That patient also, later on after treatment, the score became 0 out of 10. This is another patient. She was also complaining of abdominal pain, discharge, etc. And her score was 4 by 10. She was also underwent for biopsy and it also came to be CIN1. But in this patient, the symptoms got much relieved, but the score, it reduced, but it still persisted to be 2 by 10. Further biopsy was not advised because 2 by 10, the score is not that alarming score, but even then, it didn't become 0. She was still under follow-up. Later on, the patient itself, she had suggestions that she can do the total removal of surgery or of the uterus, or she can do a thermal ablation of the cervix. She went for thermal ablation and she's okay now. So these are some of the cases. So I always want to tell that all the cases, we can't say that all the cases can be cured totally, but we can identify them. To a large extent, we can cure them also. But even after curing, these patients need regular follow-up. If she had CIN1, later on she doesn't show CIN1, it doesn't mean that she'll not develop CIN1 further. Yes, she may develop. If the infection, all the situations still persist, she may further develop. So we can't claim that all the patients can be treated and cured and all the cancer is getting vanished with our treatment alone. It's not like that. There are certain cases which makes us to think again that what happened in that patient. There are such cases also. There are some cases which we never expect, and then that 7 by 10 I never expected, and it came to be 0 by 10. So that was like sometimes that's the beauty of our shastra, which only we have. The dosha, the pathology, all those things has its own place. When we put the drugs, specifically it breaks the samprapti vigatana, it happens. Of course, the vyadi may get corrected. Moreover, we always have to think, along with that, we have to go for the screening of these patients. The screening is the most important thing. Whomever, at least 10 patients we screen, we can get 1 or 2 CIN cases. We have saved her from a cancer. So let me end the session. Again, reminding February 4th as World Cancer Day. So I'm privileged to give a session. Let all of us, it be an eye-opener for all of us, for the females who come to our OPD. Let us think how we can secure them from cancer. Thank you one and all. Also, I would like to give my humble thanks to Madam Dr. Kamini ma'am, who has given me an opportunity to take this session and also being my guide, and also the AYUSH Samriddhi team who have invited me for giving this session. Thank you. Yeah, very nice, Prajita. It was really excellent presentation. Thank you, ma'am. Better to have feedback from others. I always say good to you, but Yes, I think I would like to have some feedback from other dignitaries who are present over here. So anyone want to say anything about this presentation or add something on this topic? All are welcomed. Today we have enough time for open session. Yes, Half yes, an hour. Yes. yes. Ramir sir is also with us. Yeah. अंजना मैडम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कुछ इस टॉपिक पे मैडम? नमस्ते मैम। जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन नमस्कार। था, बहुत अच्छा जी जी, बहुत अच्छा बताया। और जनरली ऐसे केसेस तो हम लोग को मिलते भी हैं, और हम जैसे भी इस एज ग्रुप में या कुछ भी किस तरह की हिस्ट्री होती है, तो आफ्टर 30
तो हम सबका पेपर स्मेयर जनरली करा ही लेते हैं पेशेंट का, क्योंकि पेपर स्मेयर एक सिंपल सी जांच भी है और साइटोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो देखना भी जरूरी होता है। और इस तरह में केसेस में भी चल भी रहा है, रिसर्च वर्क भी चल रहा है, और जनरली अपामार्ग क्षार का जो है हम लोग इस समय करवा भी रहे हैं। बहुत अच्छे से क्षार का प्रतिसारण चल रहा है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मैडम ने बहुत अच्छा बताया है, एचपीवी भी, एलवीसी पर भी मैडम ने बहुत अच्छा बताया, कोल्पोस्कोपी में भी मैडम ने बताया कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, और जितना अर्ली टू डिटेक्ट हम इसको करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि योनि व्यापन में करोनरी योनि व्यापन की तरह इसको बताया गया है और काफी डिटेल में मैडम ने इसके बारे में हम लोग को बताया है। हम जनरली क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है और थोड़ा सा पेशेंट को प्रक्षालन के लिए कभी कभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बहुत ज्यादा मेडिकेशन नहीं होता है, तो फिर हम निम्बालिक चूर्ण का क्वाथ भी बनवा देते हैं, या फिर हम कभी कभी जो है वो जैसे मैडम बोल रही थी सहजन या वरुण आदि का भी क्वाथ बनवा के उससे भी अवगाहन करवा देते हैं। और बाकी पंचवल्कल वगैरह अगर पेशेंट ले आते हैं, खरीद पाते हैं, तो फिर वो पंचवल्कल तो बेस्ट होता है। तो इसी तरह से ही इनका प्रतिसारण कराना, इनका प्रक्षालन कराना, अवगाहन कराना, और उसके बाद उनके इन्वेस्टिगेशंस कराना, इन्फ्लामेशन पे नजर रखना और हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देखना। बाकी पेशेंट की सबसे सबसे ज्यादा कंफर्मेशन इसमें यही होता है कि ये पेशेंट हमारी कहीं जो मेटाप्लेजिया में तो नहीं जा रहा है, डिस्प्लेजिया चेंजेस हो रही है वो कहाँ तक जा रहे हैं, सिन है तो किस ग्रेड का चल रहा है। तो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स मैडम ने बताए हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक रहा है। और थैंक है मैडम, आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद है हम इसके लिए कि आप हम लोग को एक बार फिर से सारा का सारा रिवाइज कराते हो और नई नई चीजें पता करते हैं। पवन सर हैं हमारे, और शर्मा सर हैं हमारे, और हमारे अग्निहोत्री सर हैं, ये सब हम लोग को कुछ ना कुछ स्पेशल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ अभी इन लोग के कमेंट्स भी आएंगे जो कि सबके लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के। इस समय लगता है बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ है ये समय। थैंक यू मैम। जी जी मैडम, ये सारे जो इसने बताया ना फोटोग्राफ्स, वो हमारे अपनी ओपीडी के ही हैं जो हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं, और जो पेशेंट्स आते हैं वो वहीं के लिए जी हुए हैं। और ये अब खैर हमारे हॉस्पिटल में तो खैर फैसिलिटीज भी हैं और मेडिसिन भी जी सारी मिल जी जाती है पेशेंट्स को, जो भी हम चाहें। अगर जो भी क्वाथ चाहे, जो भी मेडिसिन, तो वो भी थोड़ा हमारे लिए वो प्लस पॉइंट रहता ही है कि वी आर हैविंग फैसिलिटीज। तो इससे केसेस आते हैं, और दूसरा है कि अवेयरनेस की जरूरत रहती है पेशेंट्स में, कि अवेयरनेस और जी आइडेंटिफिकेशन। तो टाइम टू टाइम थोड़ा सा हम ये स्क्रीनिंग कैम्प कर लेते हैं। तो और अब तो रूटीन बना लिया हम लोगों ने कि डेली पेशेंट जो भी आते हैं उनको हम कोल्पोस्कोपी रूम में भेज के फिर उनका कोल्पोस्कोपी भी करा लेते हैं, जिनका चाहे पेप्समेयर भी करा ले, कैंप की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब डेली बेसिस पे ही कर ही रहे हैं। जी और फिर ऐसे आइडेंटिफाई करके तो फिर पेशेंट्स को जैसे अवेयर करना और जल्दी से मतलब उसको एक्सप्लेन करना और कैंसर से बचाना ही एक थोड़ा सा एम रहता है पेशेंट को, कि नेक्स्ट स्टेज में ना जाए और पहले ही हम उसको बता दें कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो एक थोड़ा सा ये बहुत कि जरूरी है जी मैम, हाँ बहुत जरूरी है। कई लाइफ हम लोग इससे सेव कर सकते हैं, और आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम, अच्छा लगता है सुन के भी। और थोड़ा बहुत हम लोग भी उसी से सीख के कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास भी जैसे भी अगर पेशेंट तैयार रहता है तो पेपर्स में वगैरह हम लोग बाहर ही भेज पाते हैं, लेकिन ये है कि हम रिपोर्टिंग कराते हैं मैक्सिमम। हमें लगता है मंथ में हमारे पास भी 100 आउट ऑफ 100 केसेस के हम पेपर्स में कर लेते हैं, इसीलिए हाँ क्योंकि बस। हमें लगता है कि डिटेक्ट करना चाहिए जरूर। डिटेक्शन बहुत अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, मैम। और दूसरा कि अभी पेशेंट्स में भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ भी गई है, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है ना, कि जी थोड़ा जी सा जी उनको नॉलेज भी बढ़ने लगा है, समझने भी लगे हैं, तो वो आ जाते हैं, टेस्ट भी करा लेते हैं। इसलिए जी मना मैम। नहीं करते, मतलब मान जाते हैं। ये बात भी अभी प्लस पॉइंट है आजकल हम्म, ना। हाँ, जी अदरवाइज तो मैम। पेशेंट को जी बोलना भी थोड़ा मुश्किल होता था कि ये टेस्ट कराना क्यों कराना। पता रहता है उनको कि हाँ ये पेप्समेयर होता है, करा लेना चाहिए। तो मान जाते हैं पेशेंट, ये भी है ना। हम्म। जी मैम, चेंज हुआ है, शायद सोशल मीडिया का कमाल होगा या अवेयरनेस जो भी बड़ी होगी, लेकिन ये जी है कि जी पेशेंट जी। बहुत ज्यादा जी जी पेशेंट बहुत ज्यादा जिद नहीं करता है। अगर हम कहते हैं तो कहता है ठीक है मैडम करवा लेते हैं। ये हाँ अच्छा हाँ, लगता बस है जी बस मैम। वो प्लस पॉइंट जरूर मैंने देखा है कि जी जो बेशक हम बोलते हैं कि पेशेंट गूगल करके आते हैं, लेकिन ये बेनिफिट भी है कि ऐसी कंडीशंस में पेशेंट मान जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, तो वो करा लेते हैं, ये है ना। जी मैम। जी जी। मैम।
कोई और अपना व्यू रखना चाहे तो रख सकता है, या पूछना चाहे कुछ प्रेजेंटेशंस के बारे में, अगर किसी का डाउट है तो। नहीं तो फिर हम रामवीर सर का फिर लास्ट ओपिनियन सुनना चाहेंगे। सर, आप अगर कुछ बोलना चाहें तो। जी मैम, आवाज आ रही है जी मैम? जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, क्योंकि गांव आया हुआ हूं, तो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। सेशन बहुत अच्छा रहा। मैम को मैं बधाई देता हूँ कि सारे उनको पॉइंट्स को उन्होंने छुआ, आयुर्वेद का भी और मॉडर्न का भी। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसके अंदर। जहाँ तक मुझे अपना अनुभव की बात बताता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे केस आए अपनी लाइफ में, मगर इतने ज्यादा संसाधन नहीं होने की वजह से हम लोग उसको सही तरह से ट्रीट नहीं पाए। हम लोग यानी मैं पीवी करने के बाद में हमारे पास दो ही संसाधन थे, पीवी करना और पीएस करना। उसके बाद में अपने जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है या फिर अपने पेपिस्मेयर कराना है, वो अपने पेशेंट को बाहर भेजते थे। मेरी लाइफ जो पेशेंट आए, मैंने ऐसे पेशेंट देखे थर्ड स्टेज के अंदर, कि जिसके अंदर अपने रेक्टम, वेजाइना और अपने जो वेसिकल यूरेथ्रल है, ये तीनों के तीनों अपने वो हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो उसकी स्टूल भी, मेरे पास पाइल्स का काम करता था, मेरे पास इस तरह की लेडीज आई जिनका स्टूल वेजाइना के थ्रू आ रहा था। तो मैंने देखा ये कैसे हो सकता है, अपने रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला तो नहीं है। जब मैंने उसको देखा, जांच किया, तो उसका जो पिक्यूलियर जो अपने डिस्चार्ज होता है, वो हाई, मतलब ये मान लीजिए जैसे साबूदाने का जो अपने पानी होता है, एकदम म्यूकॉइड और विस्कस उसका होता डिस्चार्ज था। बाद में देखा मैंने, अब अभी बात हुई थी कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग की, तो मैंने जब अपने जो इरोजन के ऊपर कार्य किया था 1984 के अंदर, तो उसमें हम लोग करते थे अपने चिलर्स टेस्ट, चिलर्स आयोडीन टेस्ट, उसको हमने एक्सक्लूड किया था। अगर कार्सिनोमा है पेशेंट का तो हम उसको अलग कर देंगे। तो इनमें इस समय भी अपने को दोनों करना पड़ता है कि कार्सिनोमा में भी अपने वही चीज होती है, कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग होती है, और वास्कुलर सर्वाइकल इरोजन में भी वही चीज होती है। तो इनको अपने डिस्क्लूड करने के लिए पेपिस्मेयर टाइम टू टाइम करें। सबसे पहले पेपिस्मेयर बाद की बात आती है, पहले आती है साइटोलॉजिकल चेंजेस। तो जो साइटोलॉजी है, उसमें अपने एमआई इंडेक्स देखते हैं, मैक्चुरेशन इंडेक्स देखते हैं, उसमें साइटोलॉजी के अंदर चेंजेस ज्यादा आते हैं। तो पिपेट साइटोलॉजी, उसकी ब्रश साइटोलॉजी, इसके अलावा अपने को अपने स्पेचुला के द्वारा जो करते हैं, स्पेचुला के द्वारा साइटोलॉजी करते हैं, एंटीरियर लिप की और पोस्टीरियर लिप की, उसको जरूर करें। उसके आधार पर अपने सेल का पता चल जाता है कि सेल अपना जो है हाइपरप्लास्टिक सेल है, हाइपोप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया के बाद में नियोप्लास्टिक सेल्स हैं या मेटाप्लास्टिक सेल्स हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स में अगर हाइपरप्लास्टिक सेल्स कई सालों तक पड़े रहते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है। और ध्यान रखें, कार्सिनोमा जो अपने कैंसर का, उसका सर्विक्स का होता है, मोस्टली स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा होता है, और दूसरे अपने आते हैं अपने एडिनो कार्सिनोमा होता है। तो सेल्स के अपने सर्विक्स के अंदर एडिनोज कहाँ है, वो है एंडो सर्विक्स के अंदर। और ये कार्सिनोमा होता है ट्रांजिशनल जोन की जगह से होता है। और अपने जो इरोजन होता है, वो भी ट्रांजिशनल जोन की जगह से ही होता है। तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई खबेड़ नहीं पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एचपी अपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वहां पे इन्फेक्शन कर रहा है। तो ट्रांजिशनल जोन में कब कब परिवर्तन आता है, तो अभी मैं हमने बताया था, जैसा कि अपने एडोलसेंट पीरियड के अंदर महिला बच्चियां होती है, 10 साल से अपने ये संभावना बन जाती है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशनल जोन है, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई होती है। इसी तरह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है महिला में, उन महिलाओं के अंदर भी ट्रांजिशनल जोन के अंदर चेंजेस आते हैं। इसी तरह से बार बार प्रेगनेंसी होती है, वहां पे भी ट्रांजिशनल जोन के अंदर अपने परिवर्तन आते हैं। तो जो पॉजिटिव फैक्टर है, अर्ली अर्ली सेक्सुअल अपने कॉन्टेक्ट, मल्टीपल पार्टनर कॉन्टेक्ट में क्या होता है, अपने सीमेन है, सीमेन की इम्यूनोलॉजी जो होती है, उसके अंदर रिएक्ट करती है कौन सी, अपने ट्रांजिशनल जोन। तो उसकी वजह से मल्टीपल सीमेन की वजह से ऐसा होता है। प्लस अगर वहां पे ट्रांजिशनल जोन के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन के चांसेस कम बनते हैं, जैसे अपने एड्स के चांसेस कम बनते हैं। तो अगर वहां पे इंजरी है कहीं भी, इंजरी यानी ट्रांजिशनल जोन के अंदर पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, या उसके अंदर किसी तरह के अपने अपने साइटोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ट्रांजिशनल जोन के अंदर कोई भी साइटोलॉजिकल चेंज आ रहा है, वो होगा खबे गुण, और खबे गुण होने के बाद में वहां पर व्याधि तत्व रुक जाए थे, तो वहां पर अपने पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा, उससे होगा। अब आती है बात उसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में उसमें 3 तरह का ट्रीटमेंट आपने 3 स्टेज बता दी। फर्स्ट स्टेज 3, कार्सिनोमा इन सिचु, CIN फर्स्ट,
माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब इसमें भी 3 जोन होते हैं, अपने सुपरफिशियल लेयर, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेयर, उसके बाद में बेसल लेयर। 3 साइड तक जाता है, जब तक म्यूकस लेयर तक रहता है तब तक उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा मैम ने बताया, मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग, आपकी टीम को, कामिनी जी, आपकी टीम को, कि आपने कार्सिनोमा के पेशेंट को ट्रीट किया। मैं इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मगर इसको मान लें कि जब तक ये दोष जो है सुपरफिशियल है, किसमें है, CIN में ही है, अपने ज्यादा ज्यादा बेसिक लेयर तक गया है, तब तक तो काम करेगा। जैसे ही इन्वेशन इसका हो जाता है, इन्वेशन यानी वास्कुलरिटी के अंदर जाता है, जैसे वास्कुलर इरोजन होता है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, इसमें भी होती है, तब उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू होता है। तो CIN जब तक रहेगा, CIN फर्स्ट, तब तक कोई वो नहीं मिलेंगे सिम्टम्स। CIN 2 से व्हाइट डिस्चार्ज मिल सकता है, CIN 3 में व्हाइट डिस्चार्ज मिल सकता है, और CIN 3 के अपने उसके बाद में इन्वेशन शुरू होने के बाद में ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग के बाद में अपने प्रेशर ब्लीडिंग होती है, जो कॉन्स्टिपेशन के बाद में होती है या जोर लगाने के बाद होती है। इसके बाद में अगर फैलता है तो फिर मांसपेशी मस्कुलर के अंदर जाएगा। उसके बाद में वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकंड बी, जिस तरह इसकी साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसको आगे बढ़ता जाता है। तो CIN के अंदर हम मेडिसिन करेंगे, या फिर अपने लोकल, जैसे मैंने बताया कि क्षारकर्म करेंगे, और क्षारकर्म के साथ में अग्निकर्मी करते हैं। तो अग्निकर्मी अगर CIN सेकंड तक है तो अग्निकर्म अगर करते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज अगर इन्वेशन हो गया, इन्वेशन के बाद में रिजल्ट मिलने में मेरे मानना है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। और इसके अंदर कोनाइजेशन भी करते हैं, कितनी डेप्थ तक गया है तो कोनाइजेशन भी करते हैं, जितना एरिया है उस कोनाइजेशन के द्वारा निकाल देते हैं, तो उसके अंदर अपने को रिजल्ट मिलता है। तो जैसा सुश्रुत कह गए हैं, यतो गतिम विद्यात् उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र विडम पुर्यात् यथा दूषण तष्टति। तो उसका अगर एक भी सेल रह गया, जहां तक सेल गए, आपने जैसे हमने बताया कॉल्पोस्कोपी करते हैं, कॉल्पोस्कोपी वही है, अपने सेल्स हैं जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और माइक्रोस्कोपिक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि कार्सिनोमा के सेल हैं या इरोजन के सेल हैं। तो इनके आधार पर अपने उनको डिस्क्लूड करते हुए अगर उनको ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। इसके बाद में जब इन्वेशन हो गया, इन्वेशन के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद में तो उसको पेशेंट को सर्जरी, मैंने बताया था, अगर पेशेंट के अपने फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उसको सर्जरी के लिए ही अपने तैयार करना चाहिए। अब उसमें फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, उसमें आप सर्जरी हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, और उसके बाद में सेकंड बी आ गई तो उसके अंदर हिस्टेक्टोमी के अंदर अपने को पान हिस्टेक्टोमी अथवा तो रेडियल हिस्टेक्टोमी के लिए उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इन्वेशन जो है, इन्वेशन के बाद में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, और उसके बाद में अपने इसका जो है लिम्फ के द्वारा इसका मेटास्टेटिक स्टेज में पहुंच सकता है। तो उसके बाद में अपनी जो ट्रीटमेंट है, हम लोगों की ट्रीटमेंट जो है, जब तक दोष इसका करें, और जैसा मैंने बताया कि दोष को अगर शोधन करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा, और स्थानिक चिकित्सा भी करते हैं उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, जो हम शोधन करते हैं, ओरल मेडिसिन देते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन बन रही है अपने उसमें जो ट्रांजिशनल जोन में, वो अपने खवे गुण को खत्म करेगा, और खवे गुण खत्म करने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन है उसको कम करेगा। लोकल मेडिसिन है वो भी उसी तरह का काम करेंगी, और लोकल मेडिसिन के साथ साथ ओरल मेडिसिन निश्चित ही काम करती है। तो कुल मिला के CIN फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वो इन्वेशन हो गया, मस्कुलर लेयर तक पहुंच गया, तो उसके बाद में अपने को रिजल्ट मिलने में थोड़ी तकलीफ रहेगी। मेरे पास पेशेंट आते हैं इस तरह के, तो मैं उनको रिफर करता हूँ, और निश्चित ही बाद में जो कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी के साथ साथ में अपने रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उनके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस तरह के पेशेंट को, कॉम्प्लिकेटरी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, और उसके जो रिजल्ट होते हैं कीमोथेरेपी के, नोजिया, वॉमिटिंग, बाल्डनेस, ये सारी की सारी GI ट्रैक्ट को डिस्टर्ब कर देता है, और अपने जो बोन मेरो को डिप्रेस करता है, जिसके एनीमिक कंडीशन वगैरह बनती है, उसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है, सर्वाइकल जो चीज है, सर्वाइकल इरोजन को पहले, सर्वाइकल इरोजन उसको अलग करें, और उसके बाद कौन सी कंडीशन है। हाँ, प्रिवेंशन की बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात की हमने। एक तो बात की प्रोटेक्शन की, कि अपने प्रोटेक्शन में कॉन्डोम के, और प्रोटेक्शन के साथ हमारे आयुर्वेद में खुद कह दिया, अगर देखा जाए डीपली, अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में खुद कहा गया है, जब ट्रांजिशनल जोन मेंसिस के साथ साथ में, जैसे मेंसिस होता है, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन कंडीशन बनती है, हार्मोन्स की कंडीशन बनती है, जिस तरह से एंडोमेट्रियम का चेंजेस आते हैं, उसी तरह से ट्रांजिशनल जोन के अंदर चेंजेस आते हैं, वेजाइनल एपिथेलियम के अंदर चेंजेस आते हैं। तो जब अपने ऋतुकाल होता है, ऋतु द्वादश रात्राणि,
तो उसमें ऋतुकाल में भी एक बात आती है, पुत्रेष्ट यज्ञ कहा है, 8 दिन तक करना है। मेंसेस बंद होने के बाद 8 दिन तक अपने को पुत्रेष्ट यज्ञ करनी है, उसके बाद सेक्सुअल एक्ट के लिए कहा गया है। तो ये पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब है सेक्स करने का मतलब है 8 दिन के बाद, मेंसेस बंद होने के बाद। तो 8 4 12 दिन के बाद करें, तब तक ट्रांजिशनल जोन जो है रिपेयर हो जाती है और वहाँ खावे गुण नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से वहां पर HPV का इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उस तरह से हमारी ट्रांजिशनल जोन अगर मैच्योर हो चुकी है, तो आचार्य कश्यप लिखते हैं अजात रजसाम, अजात रजसाम यानी रज प्राप्त नहीं हुई उससे पहले अगर सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो योनि रोग होते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा है। जैसा मैम ने बताया मिथ्याचार स्त्री नाम, तो मिथ्याचार जो है वो आहार का भी आता है और सेक्सुअल एक्ट का भी आता है। तो इनका ध्यान रखें तो निश्चित ही प्रिवेंशन होगा और निश्चित ही अपने शरीर की इम्यूनिटी सही रहेगी। वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर अपनी शरीर की इम्यूनिटी ठीक है तो वायरस नहीं होगा। हर एक महिला को अपने HPV नहीं होता, मगर सबके अंदर ऐसा वायरस ऐसा है ही नहीं कि वायरस सब जगह नहीं है, सब जगह वायरस होता है, मगर जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उनको ही वायरस अपने पीड़ित करता है। आयुर्वेद के अंदर आचार्य फिर कह गया है कि जो अध्यर्बुद है, अध्यर्बुद है, अर्बुद के ऊपर अर्बुद है, पुनः अर्बुद हो गया है, रक्त अर्बुद है, इनको असाध्य कह गया है। ये पुनर्पुनर्भव होते हैं इसलिए असाध्य कहा गया है। इसलिए इसको रक्तार्बुद में माने, या बार बार हो रहा है तो अध्यर्बुद में माने, और पुनर्पुनर होने वाले में रिकरेंट में हो रहा है उसमें हो रहा है, तो आचार्य सुश्रुत कहता है ये असाध्य है, इसलिए इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपयश मिलता है, ऐसा आचार्य कहता है। इसलिए जो शुरुआत है संचय परतादोता लवंते नोत्तरागति तेतुतरासु गतिषु भवंती बलभद्र, तो संचय जो हो रहा है, खबे गुण हो रहा है, उसी समय अगर ट्रीटमेंट कर दिया, अगर इन्वेशन होने से पहले ही अगर ट्रीटमेंट कर दिया तो आगे की उत्तर गति नहीं लेंगे। अगर उत्तर गति लेते हैं तो फिर अपने को अग्निकर्म सुश्रुत ने कहा है अशेष दोष तक, वहां तक अपने अग्निकर्म करेंगे जब तक कि अपने इन्वेशन का जो पार्ट है CI-2 का वहां तक अपने कर दो। उसके बाद हम अपने रोपण मेडिसिन दे सकते हैं, व्रण शोधक मेडिसिन दे सकते हैं और उसके अंदर पिचू भी लगा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पेशेंट आते हैं उनको निश्चित ही अपने रेफर करता हूँ, और उसके बाद बायोप्सी के लिए भी, और कौन बायोप्सी कराते हैं, कौन बायोप्सी द्वारा पता चल जाता है कहाँ तक गई है, और कौन बायोप्सी से पता चलता है कितना इन्वेशन हुआ है, कितने डेप्थ तक इन्वेशन हुआ है, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। मुझे बोलने का अवसर दिया मैम कामनी जी ने और अपने IRE से, थैंक यू वेरी मच। और मैम को फिर से बधाई देता हूँ, आपने एक एक पॉइंट को छुआ मॉडर्न आयुर्वेद को, ऐसा ही हमारा गायनी का चलता रहा तो मैं भी इस तरह से स्टूडेंट की तरफ से और सीखने को मिलेगा मुझे, और मुझे मजा आता है इस तरह से सीखने में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. thank you sir for your very nice comments. तो एक्चुअली ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि प्री मैलिग्नेंट स्टेट, मतलब अभी मैलिग्नेंसी में नहीं जाए उससे पहले ही पहचान लो, मतलब आइडेंटिफाई द केस एंड उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से उसको ठीक कर दे, जिससे वो आगे सेल में जो चेंजेस हो रही हैं वो चेंजेस ना हो और वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। मतलब ये पर्पस रहता है उसका, स्क्रीनिंग का, इन्वेस्टिगेशन का, ट्रीटमेंट का। जैसे आप बता रहे हैं कि लेटर स्टेज जो है वहां तक पेशेंट ना जाए, मतलब जो आयुर्वेद भी वही बोलता है ना। जी जी, हाइपरप्लेजिया, नियोप्लेजिया, मेटाप्लेजिया। हाँ हाँ बिल्कुल। आयुर्वेद जी का तो वैसे भी हमेशा ही अपना रहता ही है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को फोकस करिए, पेशेंट जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम टाइप, तो उसको आगे कंडीशन में जाए ही ना पेशेंट, वो इसका मतलब मेन जो है इसका हम बोल सकते हैं एम, हाँ ये रहता है इसका, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट एट अर्ली स्टेज। हाँ वो है। Thank you, sir. Thank you, madam. I think I should add two things also. सर आपने अच्छी तरह से एक और बार पूरा चीजें समराइज किया है, थैंक यू फॉर दैट। एंड जो आपने शिलर्स टेस्ट का बताया है, एक्चुअली वही है जो हम ओपीडी में भी करते हैं। यहाँ पे मैंने वाया विलाई करके बताया था। जस्ट मुझे जैसे अंजना मैम ने बताया, मुझे लगता है कि एक चीज हम ओपीडी में भी कर सकते हैं। जैसे पैप्समियर का मैम ने बोला है कि हमें थोड़ा एक्सेस का डिफिकल्टी होती है पैप्समियर कराने में भी। अगर हमारे पास एक कस्कोस्पिकुलम है और एक सोल्यूशन है लुगोलसाइडिन की, 5% लुगोलसाइडिन है, और एसिटिक एसिड भी 3 to 5% जिसे हमें डाइल्यूट करके बनाते हैं, जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml एंड 95 ml डिस्टिल वाटर लेके हम बना सकते हैं। और आयोडीन का भी सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, क्रिस्टल से बना भी सकते हैं। अगर हम ये ओपीडी में रख सकते हैं
तो हम ऐसे ही शिलर्स टेस्ट जो सर ने बताया वो हम सब पेशेंट्स में कर सकते हैं और इसी से हम स्क्रीन भी कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत से केसेस में ऐसा लगा है मुझे कि हमने पैप्समियर करा लिया, पैप्समियर में नेगेटिव ही आता है, पर फिर भी पेशेंट अगर कोल्पोस्कोपी कराया या बाद में टेस्ट अलग से करवाया तो उनको CIN दिखता है। तो पैप्समियर इज मोर ऑफ स्पेसिफिक विद द पैथोलॉजिस्ट ऑल्सो। ऐसे नहीं कि पैथोलॉजिस्ट उसको पहचानते नहीं, ऐसे नहीं, पर कुछ-कुछ ऐसे कंडीशंस अगर हमारे स्मीयर की वजह से भी अगर हमने स्मीयर ठीक से नहीं लिया तो भी पैप स्मीयर में कभी-कभी सेल्स मिस हो जाता है। पर जब हम ल्यूकोसाइडिन या एसिटिक एसिड से हम टेस्ट कराते हैं, तो हम हमारे आँखों से ही नेकेड आई से ही हम देख सकते हैं। इवन कोल्पोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम पहचान सकते हैं कि इन पेशेंट्स में कुछ ना कुछ अलग-सा दिख रहा है। तो वो वाला हम अपने ओपीडी में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, बहुत चीप से हम करा सकते हैं। जैसे पैप स्मीयर की अमाउंट भी नहीं होती, तो वो चाहिए तो हम सब लोग करा सकते हैं और वी कैन स्क्रीन मोर केसेस। थैंक यू। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज मेरे को याद आ गया, ये सेल्स के अंदर क्या परिवर्तन आता है जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने जो साइटोलॉजिकल जांच करते हैं हम लोग, तो कार्सिनोजेनिक जो सेल्स होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस है वो तो बड़ी रहती है, और उसका साइटोप्लाज्म में तो कम हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म कम होने की वजह से हमारे प्रोटीन मात्रा ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप उसके अंदर कलर चेंज दे जाता है। तो हम लोग भी चिलर्स आयोडीन टेस्ट करते थे, तो चिलर्स का सॉल्यूशन हम लोग बनाते थे आज से 1984 में। उस समय अभी मैं भूल रहा हूँ किस तरह से बनाते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन मिला के। आज तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जल्दी डायग्नोसिस होता है। अर्ली डायग्नोसिस के बाद में ही उसका ट्रीटमेंट, या अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, और उसके बाद में ट्रीटमेंट वो अगर करते हैं तो निश्चित ही रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। पहले इस तरह का नहीं मिल पाता था। तो रिजल्ट आज के समय में ज्यादा मिलने का कारण ही ये है कि हमारा अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तो आप लोगों के पास सारे साधन है, इसलिए अच्छी तरह से कर पाते हैं। और जहाँ पर कई जगह नहीं है, जैसे पैथोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। पैथोलॉजिस्ट सही तरह से अगर एक्सपर्ट नहीं है तो निश्चित ही वो गलत रिजल्ट दे देगा उसका पेपिस्मेयर का। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने सही बताया, पैथोलॉजिस्ट के ऊपर भी डिपेंड रहता है ऐसा। जी सर, इसमें ना हमें मतलब पेशेंट को अलग से वो रिपोर्ट्स वगैरह का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। ओपीडी में पेशेंट है, आपने पेशेंट का पीएस तो करते ही करते हैं, तो पीएस करते समय ही बच्चों को जैसे बोलते हैं कि आप चेक कर लो, उसको आयोडीन लगा के देख लो, अगर उसमें कलर चेंज मिलता है, दिखता है, तो फिर वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है इस पेशेंट को। वो थोड़ा उस तरफ बता रही है ये कि ऐसे हम ओपीडी में ही चेक कर सकते हैं पेशेंट को। मतलब पेप्समियर की अगर फैसिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल इशू पेशेंट को है, तो वैसे ही हम चेक कर सकते हैं ओपीडी लेवल पे। ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं, कॉल्पोस्कोपी भी नहीं है तो भी हम देख के तो उसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब डायग्नोसिस तो आगे की बात है, बट वी कैन एसेस द कंडीशन के देयर आर सम चेंजेस आर गोइंग ऑन, कि कुछ उसमें सेल चेंज स्टार्ट हो गया है इस पेशेंट में। तो उसको ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो हम बोल रहे हैं कि हम पेशेंट को प्रक्षालन करा सकते हैं, पूरण योनि पूरण करा दो, उसका पिचू रखते हैं, तो फिर उसमें जो चेंजेस आ गए हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ये बोलने का मतलब था इस डॉक्टर प्रचिता का जो बोल रही थी वो, है ना सर? मैं समझ गया मैम, तो वही कह रहा था मैंने। अपने जो नेक डाई जांच करते हैं वो भी लगभग अपने डायग्नोसिस होता है। करने के लिए। आपकी आवाज से थोड़ा वो हो गया, थोड़ा सा इधर जगह चेंज कर लीजिए, सिग्नल शायद इश्यू आ रहा है आपके यहाँ। अग्निहोत्री सर, मुझे रामवीर सर की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, आपको सुनाई दे रही क्या? नहीं नहीं, नहीं वो ना? कहीं नहीं इनर सुनाई नहीं है। कुछ नहीं सुनाई हाँ, पड़ रहा।
नहीं, बोल मैंने रहे पूरा थे, कर दिया, पूरा हो गया। अच्छा अच्छा, हो गया बोल इनका कंप्लीट। हाँ, डिस्कस हो रहा था तो हाँ, पूरा हो गया। अभी बोल रहे हैं वो ना, बीच बीच में आवाज आ रही है उनकी। नहीं, नहीं उन्होंने नहीं, मैंने बोल के बंद कर दिया, बताया कि बंद कर उनका दिया। कंप्लीट हो गया, उनका जो उनको अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा देना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, वी कैन वाइंड अप नाउ, है ना सर, टाइम हो चला है। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए 5-10 मिनट। आज काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करते बधाई देता हूँ अपने डॉक्टर प्रजीता को। पीता ने बहुत ही कायदे से, बहुत ही स्पीडली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना प्रेजेंटेशन दिया। हमारा तो मेंटल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जब हमारे बच्चे, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स या हमारे जो नवाचार से युक्त टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनवर्ड्स, वो किस तरीके से मॉडर्न से डायग्नोज्ड केस या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के केस को प्रेजेंट करते हैं, पूरी उन सब इन्वेस्टिगेशंस और उन सब प्रोबेबिलिटीज के साथ में, जहां पर क्या कोई भी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक साइड से वर्क करता है। और उसके बाद अपनी पूरी मेंटल एक्सरसाइज से जाके यूनिवापत के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, परिप्लुप्ता की डिस्कस करते हैं कि जो भी कुछ उनकी फाइंडिंग्स, चाहे वो थ्रू एलबीसी हो या फिर जितना भी हो, और उसको कोरिलेट किया प्रोफेसर रामवीर जी ने, इसीलिए कि साइटोप्लाज्म में कमी आ रही है तो प्रोटीन बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा मेंटल एक्सरसाइज करने के बाद कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, चाहे वो निम्बादी क्वाच हो, इससे प्रक्षालन हो या पंचवल्कल प्रक्षालन हो, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है कि जहाँ कंटेम्प्रेरी पैथीज के लोग हैं और या तो बहुत अच्छे समर्थवान है, पैसे वाले जाके आते हैं, लेकिन जो जाके आते हैं उनके लिए हमारे पास या अय्या में या आयुर्वेदिक सेक्शन में ही कुछ रहता है कि हम इधर ट्राई करें। आज का जो केस है वो अर्ली डायग्नोसिस के बारे में जैसे चर्चा चल रही है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट तो बेस्ट रिजल्ट्स, एक बेसिक फॉर्मूला है। और अर्ली डायग्नोसिस में किसी भी पैथी के जो टूल्स हैं या मेजर्स हैं, चाहे वो हम ब्लड रिलेटेड हो, पेपस्मियर रिलेटेड हो, अल्ट्रासाउंड रिलेटेड हो, या पेशेंट के अपनी कंप्लेंट्स को कोरिलेट करके उसके जो सिम्टम्स को साइंस से जोड़ के कुछ एक लेवल पर पहुंचे, अथवा बहुत ही अच्छे क्लिनिशियन के द्वारा हेतु पर ध्यान देके जो निदानम प्रयोजन करके भी हम उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों ने बतलाया कि एक्सेसिव क्वाइटस या वेग विधारण या विषमासन, बहुत सी चीजें बहुत ही एलेबोरेटली हमने सुना। तो ये चीज केवल आयुर्वेद में ही मिलती है और सर उसके इसमें द्वारा। थोड़ा सा ना जी, इंटीग्रेटिव अप्रोच चल रही है, मतलब इस एग्जैक्टली टॉपिक पे। नहीं जी, हाँ, ये तो आज की हमारा प्रेजेंट सिनेरियो इतना अच्छा है कि हम उधर से सारा का सारा लेके और उसके बाद हम अपने भी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं और आचार्यों के द्वारा दिए गए निर्देशों का हिम्मत के साथ में पालन करा के और हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर रामवीर जी ने इसीलिए बधाई दी कि आप लोग उस श्रेणी में आते हैं जहाँ पर कि इस टाइप के डायग्नोस केसेस को ट्रीट करके दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संस्थान कोई भी हो, अप्रोच तो आप ही लोग करते हैं, मस्तिष्क तो आप ही लोगों का काम करता है, जो यहाँ से लेके जामनगर या केरल कहीं है तो भी आयुर्वेद का ही काम। भी है तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद और का ही काम। पूरा स्प्रेड कर रहे हैं, पपरोला से लेके दिल्ली से इसलिए ना, लेके कन्नौज तक और उड़ीसा तक, हर इसलिए जगह है। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट गर्व है। होता है, इसलिए जी, गर्व होता है इसी कि है तो आयुर्वेद का ही काम हमारे भाई लोग ही कर रहे हैं बजाय और इसके कि चैलेंज हम इसमें चैलेंज का काम कर रहे अपनी हैं। हिम्मत हार जाएं कि कैंसर हो हाँ, गया तो फैमिली तो वैसे ही साइकोलॉजिकली टूट जाती है, वीक हो जाती है, और उधर फाइनेंशियली भी काफी कुछ रन डाउन हो जाती है। ऐसे